our next topic is irrigation. Irrigation means supply of water to the crop in a field is known as irrigation. For irrigation, water is important. So without water, germination of seed does not take place. Without water, जो आपकी roots हैं, they cannot develop and elongate. Without water, जो nutrients हैं, वो आपकी रूट से uprooted नहीं होंगे, means different प्लांट्स के पार्ट्स को नहीं मिलेंगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी. दैट्स व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन? सोर्सेज, वो देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन लाइक लेक्स, कैनाल्स, रिवर्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा. तो व्हाट आर द methods of irrigation? There are two types of method. ये बोल दीजिए, irrigation method are divided into two types. First is traditional method and second is modern method. Traditional method is carried out by different types of animals and it is further divided into four types. First is the moat, second is the chain pump, third is the Dakley, and fourth one is the Ryat. In all these traditional methods, animals are used to carry out the water from the wells, tube wells, etc. Another method is the modern method. It is further divided into two types and it is very important: sprinkle method and the drip method. जो आपका sprinkle method है, in this method there are perpendicular pipes which are connected to the main pipeline and these perpendicular pipes, water pipes जो हैं उनके ऊपर rotating nozzle लगे होते हैं. तो क्या होता है, प्रेशर के साथ जब वाटर पंप आउट होता है थ्रू द मेन पाइपलाइन, दैट विल कम्स इनटू द परपेंडिकुलर पाइप्स. तो थ्रू द नोजल दैट वाटर इज एस्केप्ड एंड स्प्रिंकल्ड इन द फील्ड एंड दिस इज द स्प्रिंकल मेथड. बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर अनइवन लैंड और सैंडी सॉइल. Second is the drip method. So it is very economical method because near the roots water comes out drop by drop. तो जितनी नीड है उतना वाटर लेते हैं, तो there is no wastage of water. Now next step or next task is weeding or removal of weeds. Firstly, what is weed? The weeds are those unwanted, uncultivated plants which are grown with our crop plant. तो what will happen to the crop plant? जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, न्यूट्रिशन वैल्यू जो क्रॉप की है वो हाफ हो जाती है बिकॉज जो ये वीड्स हैं वो compete करती हैं with the crop plant for water, minerals, sunlight, etc. तो इसलिए that process in which the removal of weed takes place is known as weeding. So this is the next task. Our next topic is weeding can be done by two ways. तो कौन कौन सी दो ways हैं? First is the manual removal. So second is the removal by chemicals. So we will discuss first manual removing. So what is manual removing? So when the weeds are uprooted by hand, it is known as manual removing. आप हाथ से भी उनको काट सकते हो और these are also uprooted by the tools like खुरपी or trowel. Second is the removal by chemicals. So there are some chemicals which are used to destroy the weeds and those chemicals are known as weedicides. These chemicals only destroy the weeds but not harm the crop. For example, 2,4-D. There are so many examples like MCPA. These are the two examples of the chemicals or weedicides
next step is the harvesting. What is the harvesting? It is the sixth task which is done by the farmer. But it is the process of cutting and gathering of crop is known as harvesting. It is done manually by sickle. एक टूल है, उससे जो फार्मर है वो काट लेता है अपनी क्रॉप को. एंड सेकेंड बाय ए मशीन विच इज नोन एज हार्वेस्टर. नाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two types. Harvesting is divided into two types in the case of cereal crops. That is, first is threshing and second is winnowing. आपने बताया हार्वेस्टिंग क्या है. इट इज द प्रोसेस इन विच द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप टेक्स प्लेस. मीन जो आपकी क्रॉप है वो हार्वेस्टेड क्रॉप हो चुकी है, तो व्हाट इज थ्रेशिंग? बोलते इट इज द प्रोसेस इन विच the grains are collected from the harvested crops is known as threshing. While what is winnowing? Winnowing is the removal of separation of grains from the sheaf by wind is known as winnowing. What is sheaf? Sheaf is the outer covering of that grain in which it is protected. तो wind के थ्रू हम winnowing को कर लेते हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज द स्टोरेज. अब आपको आपके फूड ग्रेन्स मिल गए हैं, आपने क्या करना है, उनको स्टोर करना है. अगर आप उनको एज सच स्टोर कर देते हो तो दे विल डिस्ट्रॉयड. दे आर अटैक्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. तो बिफोर स्टोरेज हम क्या करते हैं, अपनी फूड ग्रेन्स को, अपनी क्रॉप को ड्राई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन. तो जब वो ड्राई हो जाती है तो आप उसको स्टोर कर सकते हो. Storage is also divided into two ways. First is on small scale. On small scale means domestic level पे हम अपने होम्स में क्या करते हैं, ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं. किसमें करते हैं? मेटालिक बिन्स में करते हैं. तो मेटालिक बिन्स में हम डाल देते हैं ग्रेन्स को, और साथ में कुछ जैसे नीम के लीव्स डाल देते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे. किससे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब से. ऐसे ही है ऑन लार्ज स्केल. तो लार्ज स्केल मीन सैलोज में, ग्रैनरीज में आप जो बैग्स हैं उनमें गनी बैग्स में भर के रखते हो ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रोटेक्ट हो जाए बाय केमिकल ट्रीटमेंट. एंड दिस इज द लास्ट टास्क विच इज डन बाय द फार्मर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम animals, and this is the last topic of this chapter. Food from animals. So there are various type of foods like milk, meat, eggs, fish, honey, etc. which are obtained from animals. So on this basis we have some terms like animal husbandry. So what is animal husbandry? You have done in your lower classes. Just recall it. Animal husbandry is the rearing of plants on the animal husbandry is the rearing of animals on the large scale with proper care, with proper food and with proper shelter. That is known as animal husbandry. Now next is, what is apiculture? It is again the rearing of honeybees on the large scale for honey, of course, is known as apiculture. And last is the, what is pisciculture? Pisciculture, it is the rearing of fish on large scale, is known as pisciculture. And this is all about your chapter crop production and its management.